Okay, so hello friends, this is the demo video and I'll be teaching here the second chapter of biology of class 12th. Okay, so first of all I want to make you clear with my concept, basically my pattern of teaching. So I always try to explain each and every line of NCERT book. So in this demo also I'll be reading the NCERT and explaining the concepts on the book. Okay, so let's just start the chapter. Sexual reproduction in plants. So sexual reproduction क्या होता है वो तो हम सब जानते हैं, हम बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ते हैं. Now, so the first line of NCERT is that are we not lucky that plants reproduce sexually? So what do you think, that are we lucky or not? If I am saying that human beings reproduce sexually, so yes, we are lucky because we are able to generate our new generations, we are able to reproduce again, and then the new species of our own blood, our own family is coming up by the period of time. So that is why we are lucky that human beings reproduce sexually. So now the question is that are we lucky that plants reproduce sexually? अब प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनका कोई फायदा होगा, लेकिन हमारा क्या फायदा है कि हम लकी क्यों हैं? Why are we lucky? अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो yes we are lucky. अब why are we lucky? Because when we talk about sexual reproduction, in any case, in any organism, in any plant, in any human being, anyone is there who is reproducing sexually, that means it has variation. The new organisms that the existing ones are producing are creating some variation in the new ones. So that is the very important concept. Okay, so why variation is important? अब I am saying कि variation है इसलिए वो हमारे लिए beneficial है. अब हमारे लिए वो बेनिफिशियल क्यों है? अगर उनमें वेरिएशन है तो उनको नई तरह के प्लांट्स मिलेंगे, न्यू अडेप्टेशंस मिलेंगी प्लांट्स में. सो व्हाई आर वी गेटिंग सम बेनिफिट्स? सो यस वी आर गेटिंग बेनिफिट्स. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएशन, सो अब चलो ठीक है, इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं. दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्लांट, द प्लांट हैज अडेप्टेशन दैट इट विल ग्रो वेल इन हॉट एंड ड्राई. ओके, so by the time the area, there are some climatic changes. Now the climate is not very dry, it has some moisture also in it. So in that case what will happen? The plant will not be able to adjust with the new changing environment. So according to the change of environment, change of climate, change of anything that is naturally occurring in our ecosystem, which is not in our control, so their variation plays a very important role. Why? Because if the organism will possess some variation during sexual reproduction, in that case the plant will easily adapt the new changing environment. So this is why we say that yes, we are lucky that plants also reproduce sexually. Because see, we use plants in various forms. Plants can be used as ornaments, like as in we talk about flowers, so they are also used as ornaments. Plants give us food, fruits, vegetables, rubber, and various medicinal importance, right? So plants are very important to us. So what if a plant is not able to adjust the environment? If the plant is not able to adjust the environment, so how can we use those plants? So that is why sexual reproduction in plants is very important and it is beneficial for us also. Okay, so this was the first line where in which there was a question that are we not lucky that plants reproduce sexually? So yes, we are lucky because sexual reproduction aids variation, and variation helps the plants to adapt the new changing environment and survive well. Okay, so आगे read करते हैं. The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. So what are they saying here is aids of sexual reproduction. Okay, so if I talk about human beings, suppose
I went to a new place, a new country, or you can just imagine that you went to a new school. Okay, so in a new school, to whom you will talk at first? The only person who will attract you in various ways. या तो आपको उसके बात करने का तरीका अच्छा लगेगा, और यू विल उसकी लुक्स अच्छी लगेंगी, उसका नेचर अच्छा लगेगा, या एनीथिंग. So there are some things which you look in a person who that attracts you. Okay, so attraction is very, very important. So here also when we talk about flowers, so flowers में क्या होता है? अब मैंने बोला फ्लावर सेक्सुअल प्लांट्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो सेक्सुअली प्लांट्स में कौन रिप्रोड्यूस करता है? फ्लावर्स. चलो अब फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे, पर वो करेंगे कैसे? अगर एक फ्लावर, यू नो ऑलरेडी यू हैव लर्न्ड अबाउट बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. सो इफ देयर इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सो हाउ विल it perform sexual reproduction? So in that case it requires pollination. अब पॉलिनेशन कैसे होगी? अब सपोज करो एक लड़का है मेरी क्लास में ही, मेरी ही क्लास में एक मेरा क्लासमेट है. ही इज नॉट इनटू स्टडीज, हमेशा परेशान करता है, नॉटी है, अच्छे से बात नहीं करता. सो विल आई टॉक टू हिम? मेरे को नहीं अच्छा लगेगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगी. बट इफ देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी नाइस इन नेचर, वो हेल्पफुल है, बहुत पोलाइट है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, सो आई विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्सन. Yes, so that means that we need something to attract. कि कुछ तो होना चाहिए एक इंसान के अंदर जो दूसरे इंसान को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सके, राइट? तो सिमिलरली अब फ्लावर्स है, अब फ्लावर्स को तो चाहिए पॉलिनेशन. वी नीड कि फ्लावर्स में जो है वो पॉलिनेशन हो, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगी. बिकॉज एक पॉलन ग्रेन्स जो है वो अगर स्टिग्मा पर जाएंगे तभी तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएगा फ्लावर, राइट? सो अब ये पॉलिनेशन कैसे होती है? we all know कि pollination में क्या होता है? Transfer of pollen grain from one flower to another. And the agents used in pollination are insects, wind, etc. So flowers में ऐसा क्या होता है जो insects उसकी तरफ attract होते हैं? So ये जो अभी आपने lines में पढ़ा, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us. So yes, so colors of flowers, colors, their scents, their fragrance, their appearance. So these things are aid to sexual reproduction. Why they are saying an aid? Because these things, these features of flower attract an insect, attract a butterfly, whether it can be butterfly, a bee, or anything, which helps in sexual reproduction. बिकॉज अगर इंसेक्ट्स आएंगे ही नहीं, वो अट्रैक्शन शो करेंगे ही नहीं, अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन कैसे जाएगा? सो इन दैट केस द फीचर्स ऑफ फ्लावर, दैट आर द कलर, द फ्रेग्रेंस ऑफ दोज फ्लावर्स, द अपीयरेंस, हाउ दे आर अरेंज्ड, हाउ दे लुक अपीलिंग टू एनी इंसेक्ट और इवन ह्यूमन बीइंग. सो that is why the NCERT book is saying that the scents, the fragrance, the colors and the appearance of flower is an aid to sexual reproduction. Why? Because it attracts the insects, and when it is attracting the insects, they will cause pollination, and when pollination will occur, only then sexual reproduction will take place. Okay, I hope that I am clear. So let's move forward. So आगे है इसके अंदर all flowering plants show sexual reproduction. Yes, all flowering plants show sexual reproduction. A look at diversity of structures of the inflorescences, flowers and the floral parts, showing an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruits and the seeds. Okay. So we know कि हमारा जो ecosystem है, it is diverse. इकोसिस्टम में हर चीज की डाइवर्सिटी है. अगर हम बात करते हैं फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स की भी अपनी एक डाइवर्सिटी है. डिफरेंट कलर, उनका कलर अलग है, उनकी फ्रेग्रेंस डिफरेंट है, उनकी अडाप्टेशंस डिफरेंट है,
ओके, सो ऑल दीज थिंग्स दैट मीन्स कि फ्लावर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ फ्लावर्स होंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी डिफरेंट है, क्लाइमेट में उनके वेरिएशन मिलेगा आपको. कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो सिर्फ विंटर पोलर रीजन पे ग्रो करते हैं और कुछ इक्वेटर की साइड पे ग्रो करते हैं. सो the NCERT is saying that yes, we have diversity of flowers, but still there is one thing same, the end products. So even if diversity is there, diversity तो बहुत है, but still common end product मिलता है. क्या मिलता है? Common end products. अब flowers के end products क्या होते हैं? Flower के end products क्या होते हैं? Fruit first, and the second one is your seeds. So no matter वो कौन से कलर का फ्लावर है, कौन से एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस में सुटेबल है, कौन सा उसका कलर है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, नो मैटर, बट the only thing that will remain common is the end products. चाहे वो कोई भी फ्लावर हो, येलो कलर हो, ऑरेंज कलर हो, पोलर रीजन में ग्रो करने वाला हो, इक्वेटर के पास ग्रो करने वाला हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ग्रो करने वाला हो, कहीं भी ग्रो करने वाला हो, किसी भी कलर का हो, बट the two things that will remain common is the end products, and the end products will always be the fruit and the seeds. I hope I'm clear. Okay, so in this chapter let us understand the morphology, structure and the processes of sexual reproduction in flowering plants. So yes, in this chapter when we are talking about sexual reproduction in plants, we are going to study the morphology of plants a bit, and the later part will cover the structure of structure of reproductive organs of the plant. I hope I am clear. Okay, so now when we talk about sexual reproduction in plants, okay, so reproduction तो human beings में भी होती है, reproductive phase human beings में भी आता है, we also reproduce, but उससे पहले हम grow करते हैं, that is our vegetative phase, then हम reproductive phase पे आते हैं, and then the last phase is senescence phase. So same thing happens in plants also. Again, they also have three stages. The first one is vegetative stage, vegetative phase. In this phase, the plant will only develop. The plant will grow and develop. Okay, and then the second one is the reproductive phase. So when we say reproductive phase, so in this phase has an indication that the flowering, that is flowering. So when any plant will be of flowers, in any plant when flowering will occur, that will indicate that now the plant has reached the reproductive phase. And the last phase is the senescence phase. I hope I am clear. Okay, so in this chapter the important phase is the reproductive phase in any plant. Okay, so for this class this is it. I am going to